प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेव वात्मानात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते। Indeed, you alone know yourself by your own eternal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. The Supreme Lord Krishna can be known by persons who are in a relationship with him through the discharge of devotional service, like Arjuna and his followers. Persons of demonic or atheistic mentality cannot know Krishna. Mental speculation that leads one away from the Supreme Lord is serious sin, and one who does not know Krishna should not try to comment on Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the statement of Krishna, and since it is the science of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjuna understood it. It should not be received from a atheistic person. As stated in Srimad Bhagavatam 1.2.11, Vedanti Tattva Vidas Tattvam Yaj Janam Adyam Dhammeti Paramatmeti Bhagavan iti Sabdayati. The supreme truth is realized in three aspects: as impersonal Brahman, localized Paramatma, and at last as Supreme Personality of Godhead. So, at the last stage of understanding of the absolute truth, one comes to the Supreme Personality of Godhead. A common man or even a liberated man who has realized impersonal Brahman or localized Paramatma may not understand God's personality. Such men, therefore, may endeavor to understand the Supreme Person from the verse of Bhagavad Gita, which are being spoken by this person, Krishna. Sometimes the impersonalists accept Krishna as Bhagavan, or they accept his authority. Yet many liberated persons cannot understand Krishna as Purushottama, the Supreme Person. Therefore, Arjuna addresses him as Purushottama. Yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. Therefore, Arjuna addresses him as Bhuta Bhavana. And if one comes to know him as the father of all living entities, still one may not know him as the supreme controller. Therefore, he is addressed here as Bhutesha, the supreme controller of everyone. And even if one knows Krishna as the supreme controller of living entities, still one may not know that he is the origin of all the demigods. Therefore, he is addressed herein as Deva, the worship of God, the worshipful God of all demigods.
And even if one knows him as the worshipful God of all demigods, one may not know that he is the supreme proprietor of everything. Therefore, he is addressed as Jagatpati. Thus, the truth about Krishna is established in this verse by the realization of Arjuna, and we should follow the footsteps of Arjuna to understand Krishna as he is. Hare Krishna. वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्य हि आत्मभूत विभूतयाः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति. Translation. Please tell me in detail your divine opulences by which you pervade all these worlds. Purport. In this verse, it appears that Arjuna is already satisfied with his understanding of the Supreme Personality of Godhead Krishna. By his grace, Arjuna has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else a person may have. And through all these agencies, he has understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. For him, there is no doubt. Yet he is asking Krishna to explain his all-pervading nature. People in general and the impersonalists in particular concern themselves mainly with the all-pervading nature of the Supreme. So Arjuna is asking Krishna how he exists in his all-pervading aspect through his different energies. One should know that this is being asked by Arjuna on behalf of the common people. कथम विद्यामहं योगी सत्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन् मया. हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं. हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए. जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं. केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं. जब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें. असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं. दूसरी बात यह है कि वे प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं. उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, आपकी सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है. अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है. वह कृष्ण को जानबूझकर योगीन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं. सामान्य जन से कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह भौतिक चिंतन करता है. अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है. केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है. भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु. चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने के प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं. हरे कृष्ण.